Hello everyone. In this segment, we'll see the types of quantities used in electromagnetic field theory. So we are having basic two types. One is called as a scalar, another called as vector. So let's start with what is meant by scalar. So you can define it. It is basically a quantity which has magnitude only. That means this particular quantity will have magnitude only. It doesn't have any direction. Now when we take these examples, so in case of examples, we can take, let's suppose, temperature. Then I can take distance also. We can take the next as mass, speed, density, volume. We can take an electric charge also. So these all few quantities. There are so many quantities, but we are listing few. They are called as scalar quantities because they have only the magnitude. Now how can check it as magnitude only? Let's suppose temperature. So whenever we measure the temperature, we generally list out as, let's suppose, 27 degrees Celsius, maybe 100 degrees Celsius, maybe minus or maybe plus हो सकता है. But we never say that temperature is 27 degrees Celsius in south direction, whereas in north direction it is 100 degrees Celsius. So we never say like this one because it has only the magnitudes. Okay, so they are represented by the real numbers only. Similarly, when we come across distance, so distance could be, let's suppose I will writing the distance is 50 kilometer, but we never say that the distance is 50 kilometer towards north, towards south like this. So distance will be a pure scalar quantity. In the same case, we can go for mass, which is measured in terms of kgs, speed, meter per second. But again, remember, speed is a scalar quantity because it is not specified in a particular direction. So जो भी quantity without a direction specified है, it is called as the scalar quantity, only magnitude. Counterpart, second one, we are having the second type as vector. Now how can define it? So you can define it is a quantity that has both magnitude and डायरेक्शन. ओके, सो इस वाले को दोनों पैरामीटर हो सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज होगा डायरेक्शन. सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ इफ यू टेक इट्स एग्जांपल, so in the example we are having very first as velocity, the basic one, velocity मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होता है, लेकिन हम उसको डायरेक्शन पे भी दिखाते हैं. सेकंड है displacement. Always remember there is a difference between distance and displacement. Distance is from a particular point, that is the length between 2 points, but displacement जो होता है वो मूवमेंट होता है from one point to another point. तो one point to another point अगर हम स्विच करते हैं तो उसका डायरेक्शन आ सकता है. दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, एक वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली we can call force, they can be having acceleration also, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो उसका यूनिट होता है. so these are few terms that we are listing. These all are called as the vector quantities. So anything that has a direction, तो उसको सिंपली क्या कहते हैं, वेक्टर वी कैन कॉल इट एज. अब देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है, सो लेट अस रिप्रेजेंट द वेक्टर. अब देखिए लेट्स सपोज वी आर हैविंग ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं ओ, दैट स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, एंड इट इज़ एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो ये वाला हम कंसिडर करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज पी. ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. सो ओ को हम कंसिडर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो P है जहाँ ये टर्मिनेट हो रहा है उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग पॉइंट. सो नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम O to P. सो द डायरेक्शन इज फ्रॉम O to P.
So this will be the direction. So always remember this will be our direction. तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज स्टार्टिंग पॉइंट O, terminating point P, and this will be its direction. So it is moving from O to P. So any quantity with this particular arrowhead is called as a vector quantity. Okay, so this will be the movement. So हम इसको लिखेंगे vector will be OP bar and there will be a distance between O and P. तो उस वाले डिस्टेंस को हम निकालेंगे एज OP बार मैग्नीट्यूड. अब देखिए ये जो हमने लिखा है दिस इज टर्म फॉर मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार we can call this as R. That is nothing but the distance between O and P. So generally वेक्टर रिप्रेजेंट होता है OP बार से और उसका जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा R. अब देखिए अगेन R इज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट O एंड P. तो ये क्या हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस को तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे सो वी आर मूविंग फ्रॉम O टू P. सो वी आर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम O टू P. किस डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में. तो ये जो है वो हो जाएगा हमारा वेक्टर. सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी. आई होप यू आर गेटिंग इट. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर OP बार. अब अगर हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आई कैन राइट OP बार इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ P बार विथ O बार. ये हम बाद में भी देखेंगे नो एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में. लेकिन हियर OP बार इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट. सो इसके बिहाफ पे हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी.